डेविल्ड एग्स में अंतर क्या होता है? लाइक उसमें फिलिंग क्या होता है? I don't know. Rejects? डेविल्ड एग्स. It looks like normal boiled egg. I think eggs are the only like there's a sinful eggs are deviled eggs, you know. मुर्गी पे डिपेंड करता है. ऐसा ना होता है. Deviled eggs, bro. This is something new. डिश का नाम है या फिर एग्स का नाम है? हाँ, डिश का नाम है. बट लाइक मेरे को पहली बार देख कर लगा था कि इट्स जस्ट ऐसा अच्छा, boiled असल egg तो but fancied. फैंसीड बॉइल्ड एग. हाँ, वो जो योग को आई थिंक कुछ ना कुछ करके ऐसा वो पाइप में डालकर रहा है, ये देखा है मैंने. What's the point? योग को फैंसी करने का पॉइंट क्या है? हाँ, नहीं, नॉट द नॉर्मल योग. आई थिंक कुछ ना कुछ डालते हैं इसमें. क्या क्या एग्स में? ओह, इट्स नॉट इवन योग. What? I have been lied to. मेयोनीज मस्टर्ड का कॉम्बो है. Never mind. नहीं, जो मैं कैफे में खाया उसमें मस्टर्ड नहीं था. So deviled eggs, also known as stuffed eggs, curried eggs, dressed eggs, or angel eggs. ठीक नहीं. How is it angel or devil? साथ में कैसे? मतलब egg हो गया ना वो खाली. It's just egg. So it's like hard-boiled eggs with the yolk scooped out and the space that you created refilled with mayonnaise, mustard, and sprinkled with paprika, cinnamon, or curry powder. So mayonnaise और mustard का कोई तो mixture वो बैग पाइप क्या है पाइपिंग बैग से डाल रहा है. हाँ, तो ठीक है. Would taste good, I guess. Mayo, mustard. I पता नहीं. I can't imagine दोनों का mixture क्या हो. खा के देखा था, बहुत घटिया था. Nice. Looks good though. Looks so good. True. नया लाया तुम Friday. Nice. मेरे क्या पास टॉपिक है ये? नहीं. खाना? We are not talking food. No. मैं सोचा कि cold open sir. It's a cold open. As a start होगा. Nice. Okay. Hello, hi everyone. Welcome to Into the Rabbit Hole podcast. I'm your host Fye, and with me today is our normal co-host Terren, and joining us in this new season / पता नहीं क्या बोलेंगे. Is this a new season? Is this a new beginning? कुछ तो है. Something. What should I call it? Joining us in the start of something new is Muffin. Hello, Muffin. Hello. Hello. Yes sir. मैं सोच रहा था पार्ट ऑफ गर्ल्स अपन बन सकते हैं. I have different blossoms. I choose Buttercup. Well, Muffin. तेरे पास एक ही ऑप्शन है. Wait, क्यों एक ही ऑप्शन है? 3 थे भाई. मैं आधे का. He is Buttercup. I have different blossoms. तू देख ले अपना. I'm the mad scientist. Fuck you. Mojo. So, I have seen enough videos to know कि Mojo Jojo was justified as well from his perspective. Yes. वैसे तो सब होता है. नहीं, उसका कैरेक्टर काफी अच्छे से लिखा हुआ है. वैसे बोल रहे हो? हाँ, फिर ठीक है. मैं तो बोल रहा था कि रियल लाइफ भी सब जस्टिफाइड ही होता है ब्रो. सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है ब्रो. क्या बताओ, सामा का भी अपना पर्सपेक्टिव रहा होगा. Okay. ठीक है. नहीं, not okay. I mean, That's not how you want to start this. होता है भाई. पहले एपिसोड में कैंसर. अरे मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ ना. बट I didn't know that. True to the tradition है Muffin. हम लोग को भी पहले एपिसोड में यही था. what I'm saying is किसी को Yes. जज मत करो, उसका पर्सपेक्टिव भी देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड सामने वाले का पर्सपेक्टिव. क्या पता वो सच हो, तुम गलत हो. उस दिन तुम्हारा मरना था. Right? True words, but I completely disagree. Because that's what we are doing today. We are today judging people. Let's go. You're judging people. Okay. Sir, we are Yes. judging people. I'm very bad but at judging people. Though. Yeah. उससे पहले I just wanted to give a preface because अपना like it's the first recording where we are recording as a like it's new for you because तुम F1 episode में थे, but it was not a kind of normal recording. It was a tutorial for us. अपन बैठे थे, प्रखर अपने को सिखा रहा था. True. This is normally what we do, and I thought कि let's keep it simple starting with and go with something that we have done before. मैं प्रखर पहले भी लोगों को जज कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे. I think that is the general tone of this podcast. I think so at this point. Yes. That's it. So no more holes. Excuse me. I say what? Kindly disappointed. कोई बात नहीं guys. I don't know. That's so cute, sir. और जब तक There are ऐसे ही holes, होगा तब तक but we are. there are holes. Okay, cool. Of course there are holes. How can a person exist without holes?
Okay. नहीं So नहीं what other बोलो holes are we talking about? मैं तो रैबिट होल की बात कर रहा था And also that. तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो बे? कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, भूल जाओ. I have no idea. I'm the Oh host. God. Order in the court. I'm just looking at Mojo Jojo का background बस और कुछ नहीं. I think मेरे पास एक वीडियो था. I'll send you the link बाद में कभी. Okay. मैं बैठ के देखा था the lore behind Powerpuff Girls. कभी पता नहीं क्यों. Oh, I don't मैं भी remember ऐसी वीडियोस much देखता about हूँ. एक बंदा है ना जो ऐसे लोड्स बनाता है बैठे बैठे. स्पंजबॉब का भी था कुछ तो. मतलब No? I don't remember channel का नाम, but I have seen some stuff. YouTube keeps recommending me randomly. मैं एक बेंटन का वीडियो देखा था, उसके बाद उसको लगता है कि मैं कार्टून देखता दिन भर बैठ के, तो मेरे को कार्टून भेजते रहता है ये तो. Oh. Somehow YouTube मुझे हर एक हफ्ते में एक बार वो मार्कस ब्राउनी का 4th of July का वीडियो रिकमेंड करता है जो मेंबर्स ओनली है. Why? I think he Marcus. wants you to be a member. I thought कि Yeah, तुम लोग maybe. लाइक सबको होता है, तुम लोग को नहीं होता क्या वो? So YouTube algorithm is very specific. In fact, मेरा सुबह या दिन का algorithm is different than रात का algorithm. जो वीडियोस मेरे को रात में रिकमेंड होते हैं वो दिन में नहीं होते हैं. Oh. I also doesn't put that many recommended. I think it's fine. ये मुझे नहीं पता था. नोटिस करूंगा मैंने नेक्स्ट वीक के लिए. Yeah, try to look at it. I am pretty sure it's different, or maybe I'm just being targeted. I don't know. कुछ तो हो रहा है. अगर लाइक डिफरेंट किस हिसाब से कि जैसे तुम रात के वीडियो से उस हिसाब से ही रात को आ रहा है एक्टिव, वो दिन में नहीं आ रहा है. पता चला. नहीं, दिन में आई एम नॉट बीइंग सजेस्टेड एज अ गेम प्ले वीडियोस. मेरे रात का YouTube फीड इज फिल्ड विद गेम प्ले स्टफ बिकॉज मैं स्लेयर्स फायर या फिर अदर रोग लाइक गेम सिंगल प्लेयर गेम्स का मैं गेम प्ले देखता हूँ. तो दैट स्टफ कम्स एट नाइट टाइम, सोने से पहले या फिर अराउंड दिस टाइम. एंड दिन में आई एम फिल्ड विद टेक्नोलॉजी वीडियोस, लोर, ब्ला ब्ला ब्ला. हाँ मेरा उल्टा है. लोर का मेरे को रात में तो आता ही है फॉर श्योर, बिकॉज मैं वही देख के सोता हूँ. देखते देखते बोर हो जाता हूँ तो सो जाता हूँ. बाकी YouTubers are not doing a good job then. वो पता नहीं. मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंटरेस्टेड हो ही नहीं तुम जानने में. That can also work. मेरा normally होता है कि if something I don't need ऐसा good content to make me go to sleep. जो इंसान है उसका आवाज अच्छा होना चाहिए and the pacing of the video should be good. Content जो I don't care. Yes. That's all that matters. यस. एक माइनक्राफ्ट में है बंदा ऑस्ट करके, उसका भी ऐसा आवाज है सोने लायक. I don't know him. एनीवेज कंटिन्यू करते हैं तो द पॉडकास्ट Yes. लंबा चला जाएगा वरना. सही बात है. आज ऐसा कुछ small talk रहने देते हैं. Let's just go to the main talk. But if you want to talk about something, I'm fine with it. No, there's nothing much. The usual movie shows. So that's it. Exactly. Same movie show. Same thing. Nothing unusual. अनिश मैं देखा हैमिल्टन बाहर हो गया. लौंडे के साथ बुरा हुआ. पूरा हुआ या फिर He's getting the exactly, Ferrari it's just the experience. Ferrari experience. Yes. He's privileged enough to get the Ferrari experience. So, खुश होना चाहिए उसको. He should be happy. नहीं. And should contact Charles का therapist. But okay. Let's start with what we are here to do today, judge people. So basically, when I was thinking about कि आज क्या कर सकते हैं, I was just going through subreddit because that is where my ideas come from. I am a Other editor. नहीं Yes. sorry यार it's editor. I'm just a innocent redditor. Actually, innocent and redditors don't go in a sentence together. I'm just a redditor. So yes, I was going through the Am I the Asshole subreddit, and I saw some posts that I think we can discuss. See how people are around the world. Must judge करना है एक दूसरे को, because that's what we do on Reddit. Let's go. सही फन सेगमेंट. आई फन टॉपिक सेगमेंट भी नहीं है तो पूरा टॉपिक ही है. मजा आएगा इसमें तो. I'm done. I hope so. मेरे पास 5-6 links हैं. I'll try to see कि आधे घंटा या 40 मिनट what we can do. So let's start with a basic simple one जो मैं जिसके कारण मैं पढ़ा था. Actually ये मेरे like homepage पे Reddit homepage पे आया था, and because of this I got the idea. Okay. So what I will do is I will tell you the story from the poster's point of view, and then you guys can discuss aram se. I will also chime in to see if the person posting is an asshole or not. Okay? Cool. Okay, so first story. ये पहला story is from a 21-year-old female
from the US of A, which is I think ज़्यादा से US का नहीं होता है यहाँ पे stories. हाँ, says a lot. हाँ. मैंने अभी से नहीं सर अभी से जैसे You are an asshole. by so default, yes. basically अरे तुम यार फिर तो पूरा सबरेट खत्म हो जाएगा इससे. But continue. नहीं, I'm just basing on this the president. ठीक है. अगर उसको वोट किया तो yes you are. Oh, by the way, अरे but ये इसने yeah, continue. go on. नहीं मैं बोल रहा था इसने कोई वोट किया. I don't know. हाँ, that's true. 21 year old, यही हुआ. हो भी सकता है. Anyways, I don't blame US the younger generation. US में भी कुछ तो पार्लियामेंट ने निकाला. They started something Venmo something for Venmo तो पहले से है. नहीं for US Parliament to pay off their debt. What? Yes. I'm also a fellow writer. Reddit पे ही देखा मैंने. You can GPay the government. अपना debt के लिए. हे भगवान. Doomed. I'm pretty sure it just goes to Trump's wallet. ये सब आइडिया मत दो इंडियन गवर्नमेंट को प्लीज. So, okay, Venmo and PayPal users can now send money to the US government to help pay down 36.6 trillion national debt. 36.6 trillion Venmo से तो नहीं होने वाला. Sorry. Jesus Christ. भाई साहब इसमें से कितना just student debt just so that I can sleep in peace. वो तो सर पता नहीं. 50%, 70%. ज़्यादा हो गया. Like, Let's go to the actual story. Yeah, sorry, my bad. Yes, Listen. actual story. Huh? So this is a 21-year-old female. She is half Mexican and half Chinese. US, My words back. Okay. but US basically, US born. No, US born, but it's a second generation. safe. It's fine. The first generation had taken it. Continue. Yes. So basically the poster says कि उसके parents US आए थे उसके born होने से पहले and it was very important for them कि उनकी जो बेटी है उनको सिखाएं दोनों culture के बारे में Mexican and Chinese. So she grew up learning about both the cultures. She speaks both Spanish and Chinese Mandarin, I should say. She likes to cook both the dishes from both cultures. And it's just like a normal thing for a kid. I can learn about both cultures. It's a good thing for her. So Yeah, I understand. she's क्या? नहीं, understandable. काफी अच्छा है, wholesome है अभी तक story कि that is very nice. Yeah, this is the background of the person. Okay. So main story starts because she's living in a hostel अपनी roommate के साथ, and उसकी roommate has a party going on someday, and she invites some people. And अपनी जो original poster है, she is just cooking normally. उसको पता नहीं था कि लोग आ रहे हैं घर पे. तो दूसरी बंदी जो है roommate वो अपने रूम में पार्टी वार्टी कर रही है जो भी, and ये बाहर कुक कर रही है. शी इज मेकिंग सम मैक्सिकन चाइनीज चिकन डिश जो मैं पढ़ के मजा आ गया था. मैं ढूंढा फिर रेसिपी कहाँ है एंड आई फाउंड द रेसिपी. आई लेट यू नो इफ इट्स गुड और नॉट बाद में. बट अभी पॉइंट इज कि यस शी वाज कुकिंग एंड इसके रूम से एक बंदा बाहर आया एंड ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू हर कि एक्चुअली नहीं, यस ही हर्ड हर स्पीक एज अ स्पेनिश ऑन फोन बिकॉज वो कुछ कुक कर रहे थे एंड शी वांटेड टू आस्क हर मदर समथिंग. सो ये बंदा उसको स्पेनिश बोलते हुए सुना तो ही जस्ट आस्क्ड as a curiosity से कि do you speak Spanish as well. दोनों में बात हुआ. She started telling him about कि हाँ I am half Chinese half Mexican. Normal get to know each other बात करके. Yeah. Next day इसकी जो roommate है the one who threw the party is angry with her because she thinks that she was flirting with this guy and tells her to be mindful and not do it next time, and she's angry. This is the entire story. I take it roommate as the white. Yes. Well, it's not said कहीं पे, but I assume. I should not assume, but I assume. मैं कर सकता है. Okay, continue. Yes. The basic story was this कि उसकी roommate गुस्सा है and now she उससे बात नहीं कर रही है and things are awkward now. So the original poster is asking people, is she in wrong here? I'm hoping most of the comments are no, you're not. At least इतनी story से तो. We'll see. ऐसा story इतना ही है. There is no edit after this. This is the entire story. What do you guys think? I wouldn't say कि like you're an asshole. It's just misunderstanding है दोनों के बीच में. I guess conversation पे हो जाएगा. So that's it. Shouldn't be an issue. What do you say, Terren?
Question is should not be click वो सर बंदी is the asshole or not. Roommate है. हाँ, roommate is the asshole. ठीक है. Yes. But मेरे को I need थोड़ा सा context और कि like roommate और उस बंदे के बीच में क्या है? What's going on? ठीक है, depending on Just क्या चल रहा है. normal, as said in the post, they are just normal friends जिसको पार्टी में बुलाया गया था. That's it. I wouldn't say that. And basically, roommate के according, she's saying कि you were trying to show off that you are mixed and you know both cultures. That's why I'm angry. So, say what That is now? not called show off. That is existence. ठीक है. वो भी exist कर रही है. वो है वैसे तो उसका गलती तो ये मतलब का इशू है think so. नहीं, खुला खुला बोलो सर, खुला. आपको बाद में post edit हो जाएगा bro. Don't worry. जो बोलो तो. कुछ edit नहीं हुआ, खुला बोलो. क्या बता पार्टी कहीं पे live हो? अरे चलेगा मेरे को इशू नहीं है. At this point कोई इशू नहीं. Bro, I think you're not getting the point. Issue किसी को नहीं होता बोलने में. Issue जो सुनता है उसको ही होता है somehow. फिर cancel culture आ जाता है. मतलब ठीक है कुछ लोगों को इशू होना चाहिए बोलने में लेकिन I would say that. नहीं, पहले मैं स्टार्टिंग क्या किया था का पर्सपेक्टिव देखना चाहिए. क्या पता इस केस में I can't see the perspective, man. I don't understand this. मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो जो बंदी है she is probably shy to admit कि उसको वो बंदा पसंद है किसी के भी सामने. And it just so happens कि उस लड़की को पता चला कि उसकी रूममेट और वो बंदे बात कर रहे थे. she got insecure और for whatever reason सबका अलग अलग होता है I guess. Then it's a you problem because you should be it's a her more open, problem for right? sure. हाँ, it's a her problem for sure. हाँ मतलब it's a basic finders keepers वाला प्रॉपर्टी है ये तो ठीक है. तेरे को चाहिए जाके बात कर. Exactly. या फिर चिकन बनाना सीख. मोस्ट प्रोबेबली वही काम किया है. Especially if your company is half Mexican, half Chinese. It's a flavor bomb. You're cooked, bro. मेरे सामने अगर कोई बना रहा होगा मैं भी जाके बात करूंगा उससे. टोटली केयर. कौन है? मेरे सामने कोई Wait, आधा स्पेनिश आधा चाइनीज बोलते मैं खत्म वहीं पे. मेरे सामने कोई खाना बोलते मैं तो उधर ही खत्म. हाँ भाई. See, Anyway, yeah, तो biased. सही में Good to know. no. The food, language, what else do we have? खत्म, वही बात खत्म हो गया. कहानी चाहिए नहीं पूरा. Yes. Verdict is not the answer. Roommates. हाँ, रूममेट को भी नहीं बोला. अच्छा, रूममेट क्यों बोलेंगे? मैं तो बोलूँ. Asshole is a big word. नहीं ठीक है. Even if let's say कुछ ऐसा like we are going with your theory कि like and उसको कुछ है. हाँ. Till you can't bring ऐसा उसका बंदी का background and culture in between of this. You were show off कर रहा है. Fuck off. नहीं हम बोलने चाहिए. ऐसे नहीं होता ना सर. I think अगर उस जो रूममेट की जगह मैं होता जो मिक्स है तो I would just सामने से बोला क्या तेरे को वो पसंद है बता दे. नहीं बात करनी कोई दिक्कत नहीं. See, that would be good on your half, but दिक्कत है कि रूममेट ने इसको आके बोल दिया ना कि you are showing off and आगे से ये मत करना. That was wrong. Yeah, that is asshole thing to do. क्या सकता है? नॉर्मल पर्सन बेसिस आके बोलती ना कि लाइक दूर है चलेगा. उसने ये ऐड कर दिया कि लाइक जस्ट शो ऑफ. ओके. एंड तेरा ब्रांड है तो मेरा गलती थोड़ी ना. कौन बोला था आप लोग आलू खाने के लिए? दाल मसाले. नहीं सर अपन को नहीं पता उसका कल्चर. क्या पता इंडिया में हो. तो फिर तो और ज्यादा करूंगा मैं. फिर तो asshole is not the right word. फिर मैं बहुत चला जाऊंगा आगे. I should not do that. नहीं, actually she's not Indian. उसका नाम यहाँ पे है. She's Anne. वो तो First fake name name is होगा right? Anne. नहीं, first name is Anne. तो I would assume कि real. You can't find Anne randomly घूमते फिरते. True. Common name. So yeah, we all agree कि not the asshole. Good. No, That's why I wanted to start with a normal, simple one. With other straightforward. controversy now. Straightforward ones. But let's go to the next one, जिसमें things are not so straightforward. Actually, no, let's do this one. Where is this? Yes. Another story from the US of A, because this website where stories come from the US of A. Fine. This is a story from the point of view of a middle-aged woman. So this exact age नहीं पता है, just I know कि she is a middle-aged woman. ये बंदी नॉर्मल मॉल में गई थी शॉपिंग करने, काइंड ऑफ लाइक अ हाई एंड डिपार्टमेंट स्टोर पे. एंड शॉपिंग करते होते she happened to see two teenage girls जो कि ऑब्वियसली शॉपिंग कर रहे थे. एंड उसमें से एक लड़की ने एक बूट उठाया एंड she really liked it. ऐसा देख के रहा कि she was really happy with that boot and she wanted to buy it. And
इस बंदी बोलना ठीक नहीं है, इस लेडी ने पहचाना कि दैट फूड लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, कुछ होगा ब्रांडेड, आई डोंट नो, बट शी लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं. देन ये जब अपना शॉपिंग करके बिलिंग करवाने आई, शी सॉ कि ये दोनों टीनेज गर्ल्स इसके आगे खड़ी थी इन द बिलिंग काउंटर, एंड शी हर्ड वन ऑफ द गर्ल्स सेइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू पे बाय कैश, आई एम गोइंग टू यूज माय डैड्स क्रेडिट कार्ड. एंड ये बात ये लेडी को पसंद नहीं आया. शी ended up saying this to the cashier कि don't accept her payment, she is using someone else's credit card and she does not have the permission to do so. इस बात पे obviously the girls got mad कि I have the permission from my dad, I can use this. But फिर cashier का भी I think rule था कि if he finds out कि तुम किसी और credit card use कर रहे हो, he can't allow you to do that. So technically yeah, he didn't allow her to use the card. लड़की गुस्सा हो गई, ये लेडी पे चिल्लाने लगी एंड शी वाज लाइक this is not fair, and the ladies को बोल रही थी it counts as fraud, you can't do this, and finally वो दोनों teenage girls होते हुए बाहर चली गई. So do you think in this case is this lady an asshole? I have my answers clear. I would like to hear Prakar's answer first. Let's go, Prakar. कंटिन्यू मैं थोड़ा लंबा चला जाऊंगा. I have a feeling. Same, तभी मैंने तेरा बोला. So okay, fine. मैं start करता हूँ. It's like कि Okay, just one thing, like हाँ. to ease out the whole explanation, let's call the lady Karen for Karen. Of course, for not so obvious reasons, let's call her Karen. Yes, well, easy हो गया. बार you have to choose different adjectives. हाँ. Lady, didi, joy. Then Okay, so Karen. So Yes. I think it लोगों का childhood कैसे गया दोनों का उस पर depend करता है. I would say कि तुम्हारा starting point क्या रहा है. Probably that lady comes from like middle class group, higher middle whatever. So they are reserved money spending में थोड़ा. I understand कि money comes the hard way. okay. So उस हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव देखे तो it's fine, but again तुम बाकी लोग पे अपना नहीं डाल सकते. Like you do you, ऐसा होना चाहिए. हो सकता है कि उस लड़की के पापा काफी रिच है, बोला कि खरीद ले जा, कोई दिक्कत नहीं है. तो asshole कह सकते हो क्वेश्चन मार्क, बट आई अंडरस्टैंड कि उसने क्यों बोला. Interesting point of view. हाँ, और कैशियर का भी पूरा जस्टिफाइबल है बिकॉज यू डोंट नो कि चोरी वाला कार्ड है कि रियल फादर कार्ड है. क्या कर सकते थे कि लड़की को पापा को कॉल करना चाहिए था, स्पीकर पे रख के बात हो जाती. The girl did try to show her ID key just to prove कि they have the same last name, but ये पीछे दीदी Karen was saying it's still a fraud, and if she doesn't do this, she will call the cops. Yeah. Fraud. Nah, that's just because I think she's annoyed. I guess that's it. Because they are fraud तो नहीं बोलेंगे, but कैशियर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करती probably because again in case it is a fraud, last name common होना is not like कि फैक्टर है कि हाँ भाई तेरे फादर होंगे. काफी लोग के लास्ट नेम कॉमन होता है. A simple call would have solved it. Okay. What do you say, Mr. Terren? मेरा से इसकी कौन सा बात जाना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, डोंट रियली केयर कि ऐसा मिस कैरन के ओपिनियंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन स्पेंडिंग मनी, बट वो उसका बच्चा नहीं है. नहीं वैलिड पॉइंट. गुड समैरिटन होना चाहिए ना, जस्ट गुड नहीं. या तो अपने दूसरों पे नहीं डाल सकते. दैट इज वेरी रॉन्ग. यस, ठीक है. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट्स से बच्ची का बर्थडे है और पापा ने क्रेडिट कार्ड दिया कि गो बाय योरसेल्फ समथिंग. ठीक है, नहीं है इसका पापा बहुत अमीर मिडिल क्लास फैमिली है, बट सिंस बर्थडे दे दिया कार्ड, देन व्हाट विल यू से? तो उसको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है सामने वाले का, तो लेट देम बी ना. अगर बच्ची ने मतलब सामने जो दोनों थी उन्होंने ये बोला होता है कि देखिए मेरा कार्ड नहीं है, ठीक है, देन व्हाट आई मीन, ठीक है मे बी शायद चोरी क्यों, उसने स्पेसिफिकली बोला कि मैं अपने पापा का कार्ड यूज करूं. ठीक है, दैट इज फाइन. ठीक है, लेट देम हैंडल, मतलब उनको फैमिली को हैंडल करने दो जैसे होगा.
Yeah, totally agree. That was I would remove my question mark. She behaved like an asshole. I mean, I can say why she did it. I understand why she did it, but that was an asshole move. Yes. I Hopefully she don't knows as understand. well. I agree to your logic. ठीक है, logically you should be ऐसा vigilant sort of कि अगर you hear someone say this and कोई और क्रिया कार्ड यूज करा ठीक है, you should say this. But in this case when she specifically ऐसा said कि उसके पापा allow कर रहे हैं उसको, who are you to get into this matter? वही रॉन्ग लग रहा है कि आई अंडरस्टैंड तुम अंदर अपने अंदर रखते कि जो भी उसको लग रहा है कि शायद शी इज थिंकिंग कि पापा को पता नहीं है कार्ड लेके आई है व्हाटएवर अंदर रखो बात why Yeah, would you then get it wait, out of then her? that's their problem to deal with. हाँ, Sure. या वही इस पूरा एक्टिविटी में कुछ भी इलीगल नहीं था, ठीक है। ऑल्सो अगर इतना इशू होता फैमिली को, लेट्स से अगर लेट्स से ठीक है पापा ने नहीं दिया था कार्ड, ये लेकर आ गई है खुद से, दे कैन ऑलवेज रिटर्न, पैसा वापस आ जाता, बच्ची को भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल जाता, अभी Yes. सिर्फ ट्रॉमा मिला है एंड ट्रस्ट इश्यूज और कुछ नहीं। She's going to grow up and vote for Trump. She's gonna be a Karen, next Karen. There's, by the way, इसमें I didn't ऐसा add the edit section. Edit में it says कि Karen went home and told this to her husband and her husband got her the asshole. Yes. Yeah, so now she knows it. Hopefully, like, she does better in the future. Yes. I think that was it. Nice. वैसे उसका नहीं, I'm just going to add this as well कि according to her उसका reasoning was कि she has told her son multiple not to use her card. So I'm thinking उसका बेटा maybe करता हो. हाँ, see, I That's why she got triggered. yeah, मुझे भी उसका same upbringing में scenario problem हुआ ना। हाँ नहीं भाई वो आई थिंक वो प्रोसेस नहीं कर पा रही कि दैट इज नॉट हर फैमिली, अलग फैमिली है, बच्ची अलग है, सिनेरियो अलग है। Shouldn't have said it, but- ये गलती तुम्हारे लड़के में है हमारी बेटी की है weird, very weird. गिरवान में छाप के देखो। अपने Bro, गिरदान that में one is so छाप के funny. That one is so funny. गिरवान में छाप के देखो bro. it's never going to be used in a normal conversation. This is meant for the TV. Okay. इस स्टेटमेंट को सुनते ऐसा मस्त ऐसा मोहब्बत फ्लैश हुआ मेरे दिमाग में, ठीक है। शाहरुख खान नाम का जिंदा था, प्रतिष्ठा Holy Christ. नहीं वो मैं देखा नहीं तो I can't. Sorry. Same. अरे वो स्टोरी मस्त है। And I know the story, but मैं मूवी नहीं देखा है, Okay. which is a very weird thing. मैं स्टोरी भी जानता है. This is for a different episode. But anyway. It's not a different episode for sure. Okay, so Yeah, we collectively story agree. जानते हैं, movie नहीं देखे। Sorry, I cut you off. चलो. But we collectively agree that Karen is the asshole here. Yes. Cool. Let's go. We saw 2 cases. Nice. Next one कौन सा है मेरा? Yes. Okay, yes. This one is I think 50-50, but I won't say anything bias पहले से. Okay. Also, ये थोड़ा I think could be a लंबा कहानी, so I'm just going to read this word for word from the Reddit post. Should I send this to you guys? What would be better? Read also and send out because I guess send it and summarize it, I guess, just to give the little bit of scenario. बहुत तो मुश्किल Okay. रहेगा। हाँ, मैं जनरल में पोस्ट करता है. Just to have it सामने रख, मैं TLDR दे देगा, मैं पढ़ा हुआ है. I will just in case you want to have सामने. Yes. Okay. So for context, basically, this is a husband doing this Reddit post for her wife. बंदे की मम्मी जो है, or I should actually start from the beginning. So, इस family में there's a tradition where women in the family are supposed to be like I don't know, just cooks, I guess, and they decide specifically on holidays what food to serve to the people. A normal family. Is the normal Indian family. Sure. Yes. So basically, पोस्टर की मम्मी के पास सारा पावर होता है कि हॉलीडे पे खाने में क्या बनेगा, एंड शी इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट डेजर्ट्स कि डेजर्ट में क्या अप्रूव होने वाला है. Obviously, उसकी sisters and sister-in-laws, basically every female is allowed to cook, but what passes through from the mother's as a judge POV is totally up to her.
तो पिछले 2 साल से पोस्टर की, let's call the poster, I don't know, Ron, something like that. Ron की बीवी was making cookies and stuff, and 2 साल से लगातार the mom was not happy with her and was rejecting it every time, saying the cookie sample is just not good enough. And इस बात पे obviously उसकी wife was upset. She's not being given the chance to prove that she can do well. What else? Okay, let me just go through it quickly. Okay, so yeah. The husband, obviously, Ron was confused. इसमें बेचारा वो भी क्या करेगा? The power is with her mom. So he said कि let's call it done. It's unreasonable to fight with her mom, and let's just back out of this holiday tradition. कि let's just not do this, because उसकी mom was also rejecting food from the other sister-in-law as well. Okay. So yes, according to him, they should just cut off from this tradition. And then the post him or is, her? according to him, he just says he just suggested to his wife they should cut off from this tradition. Okay. And like he had talked, I think, to his mother. So there's a section, I think. Yes, he says that we had a full-on argument about it, and she stated that my mother caused this. But Ron said that his mother was serious about this stuff, and initially he was saying just forget about this. We will. He understands his mother point of view, but he understands his wife as well, and he should just stop going for this tradition. So, what do you think? Who is the asshole in this situation? यार देख कोई ना कोई पार्टी तो ऐसा इसमें कि अपसेट होगी and if I'm in the Ron's foot, probably I would have done the same. If जो भी बना रही है wife and it is not passing, yeah, I don't know actually. Fuck, like you know, साले mom भी है, wife भी है, fuck. Dilemma, right? We can't say because we are not at that stage yet. We cannot. We cannot. But for the sake of content, but मान लो अगर 3 people है, I'm not कोई relation नहीं है इसमें. So yeah, I would still say Ron did the right thing actually. Just back off. Oh, this is spicy now. Okay. Because मेरा opinion अलग है. Okay, बोलो. Go on. So, okay. So, short answer. Who's the asshole? Mother. ठीक है. Long answer. ठीक है. उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. If you want me to go in depth. We can discuss आराम से. कोई issue नहीं है. We have time. Okay. ठीक है. First of all, family में ऐसा competition कौन करता है? ठीक है. अरे उनका tradition है बहुत ज़्यादा. हाँ भाई, tradition कुछ कह नहीं सकते यार. It ठीक is है. an emotional thing. Yeah. So we are from a country where we can't question traditions. Traditions, yes. Exactly, मैं वही तो बोल रहा हूँ. इंडिया में भी at some point डाउरी ट्रेडिशन था. ठीक है, गलत है ना. ट्रेडिशन होने से सही थोड़ी ना हो जाता है. ट्रेडिशन है गलत चीज बहुत लोग करते आ रहे हैं. But it's still गलत. I would say this is kind of like harmless tradition. Maybe like not right. Ron से पूछिए एक बार. Maybe okay. Think about it like this. Maybe growing up, उसकी मम्मी didn't feel like free enough. Maybe जब वो she was growing up in a household, she thought कि women के पास power नहीं है. She wasn't feeling the freedom in America. So when she got the chance, she chose to have the control. Women in the family should have the power, and that's why, from the cooking point of view, she chose that I should have the control in this. I would allow only the females to cook, and then something like that. But for a day. Yeah, it's just for the tradition holidays. अगर उसके पास कंट्रोल नहीं था और उसने ऐसा किया कि ठीक है उसको कंट्रोल दे, बट शी इज डूइंग द सेम थिंग नेक्स्ट जनरेशन पे ना, फिर कि तूने बनाया मेहनत क्या नहीं मैं नहीं रही. अरे बट यू नेवर नो ना, क्या पता जो कुकी बना रही हो एक्चुअली खराब था. वी डोंट नो दैट. बट नहीं वेट ट्रेडिशन इसलिए आई एम कंफ्यूज नाउ. एक सेकंड प्रखर, तू मेरे कंफ्यूज कर दिया. So wait, ये it is a tradition, right? It's a tradition. तो वो काफी जनरेशन से चल रहा होगा. Not her mom started this, right? I think so. This is her only. Like it says कि उसकी mom का है. I don't know how far back it goes, but it's a family thing. And
I पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं if she has accepted food from anyone else. Yes, okay. So she accepted the cookies from Ron की sister Sister-in-law. and 2 cousins. नहीं, not from sister-in-law. Sister-in-law and इसकी wife दोनों का reject हो गया था. Oh, hi. I Sister-in-law see. and sister got rejected. क्योंकि सास भी कभी बहू थी Yes. देखा हूँ। Yes, I understand now what's going on. Hold on. There is there is no favoritism. ठीक है, कोई sister का भी हुआ है. नहीं सिस्टर का Sister-in-law नहीं हुआ and sister नहीं, नहीं हुआ है. एक नहीं, sister नहीं, का हुआ, younger accept- sister. The sister and 2 cousins were accepted. हाँ, Accepted. but एक younger sister का भी reject हुआ है. See, info में first point part. My wife wasn't the only one whose sample was rejected. We have sister-in-law and my younger sisters. Okay, yes. हाँ. तो favoritism नहीं है देखो, ऐसा नहीं. ओह फिर ठीक Fair है है. क्वाइट रीजनेबल Fair है, but गलत है. मेरा point. अगर favoritism दिख रहा होता तो मैं उससे start करता, बस वो मजा आता है मेरे को. But what according to you is wrong? The whole selection thing. Yes, because उसने लिखा कि लाइक ये सिर्फ डेजर्ट में होता है एंड क्यों बिकॉज मदर वांट्स कि वो डेजर्ट जो सर्व हो रहा है वो बढ़िया हो, बस सारे के सारे रिलेटिव्स आ रहे दूर से, बट ये जो रिलेटिव्स ही तो बना के दे रहे तो एक्सेप्ट करो ना उनका. फैमिली है, इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग ऐसा बहुत बड़ा कोई एक हॉलिडे डिनर देते हो पूरे शहर को लेकर आते हो, देन इट माइट मेक सेंस कि अच्छा खाना देना. फैमिली है, फैमिली का खाना यूज करो ना. आई थिंक फैमिली का खाना फैमिली के लिए ही. व्हाई एम आई गेटिंग As a host, you want to serve good food. I would say. बट अगर लेट्स से ठीक है, दो भाई हैं, दोनों भाई में से एक भाई का फैमिली का खाना रिजेक्ट होता है, यू आर सेइंग दैट उसकी फैमिली इज नॉट गुड इनफ टू सर्व उसी का फैमिली. एक सेकंड calm down. I think प्रखर ट्रिगर्ड वो रिलेटिव वाले पार्ट पे. You are extracting too much information. Hold on. बात कुकी की हो रही है. I was thinking to pleasing the relatives वो वाले बात पे प्रखर काफी ट्रिगर है अभी. मैं इन जनरल कांसेप्ट हूं इसको पढ़ते ही मेरा ऐसा दिमाग में वो ऐसा क्रेजी रिचेशन फ्लैश हुआ था पूरा मूवी. ठीक है, देखा नहीं यार. I understand what you mean. if you have taken a flight you have seen that movie. If you're born in Asia, you have seen that movie. Yes. Somewhere, not on screen, somewhere. पता नहीं. Anyway, I feel like यहाँ पे like ऐसा, I won't say not a necessary answer. I think everyone kind of sucks थोड़ा हल्का. Except Ron? the cookie maker. Ron तो है. Ron is also awesome. Ron is trying to take both stands. Yes. नहीं. I was going to. No. Before the update मैं बोल रहा था कि ठीक है चलो दोनों साइड लेना चाह रहे हो, but after the update नहीं. He is favoring his family. I was going to say that. Yes, I was going to say that there is an update. Yes. If you want to read, I will read it out. So Ron says he just got off the phone with his brother and he told that his wife is doing the same thing as basically दोनों भाई की wives are doing the same thing and have decided to back out of the invitation. उसका भाई is pissed off saying that this Ron की wife is encouraging his wife to do this and he thinks the problem is bigger now. Who knows, the younger sister might join in the next year as well and back out वो भी कर जाए. And what it's, I guess we'll have to try to have a discussion with my mother about this soon and see how this goes. I guess Reddit पे पहले ये करो पहली बात तो. This applies to everyone on this subject. तुम लोग इंटरनेट का ओपिनियन क्यों मांग रहे हो? Obviously this is giving us content. Amazing. But क्यों? Like thank you but bro and grow up. Also, thank you but why? So I The only good point for mother is जो info का second point था कि she did not force anyone to participate. Force anyone. मैं थोड़ा सा ठीक है cool intentionally गया, but फिर वो family वाला supersede कर जाता है तो आने का उसने. तो I think Ron is the main asshole here. First of all, ये update के बाद it feels like कि जब उसकी बीवी ने वाइफ ने बताया रॉन को, रॉन अपनी मम्मी से कभी बात किया नहीं, वो खुद ही ओपिनियन बता रहा है कि like her mom is expecting so much, she wants to please relatives and all. I don't think he has even talked with her mom. दूसरा प्रहर की बात सही है. I think both the cooks, as in की sister-in-law, wife or younger sister, in the right, because they are trying, and if they are getting rejected, so I think anyone would back off कि इतनी बार reject हो चुका है. Try it next time maybe. I get your point actually. But मेरा बस एक बात है कि इस पूरे पोस्ट में ये बात कहीं नहीं लिखा है कि the cookies are actually good. And that's what just brings me to that every time. कि हो सकता है the mom is right and the cookie is just bad.
या हो सकता है, that is like 100% चांस कि ये हो सकता है कि cookies suck, they are fucking plant cookies, I don't know, but Yep. हाँ, again, But yes, I agree. no one was Tradition forced. before थोड़ा अजीब है, makes sense. No one was forced. True. They willingly took the participation, got rejected, decided not to do it again. What's wrong here? Ron, I was That taking is your the side, bro. question. Like, it seems like you are an asshole, bro. Have a family talk, bro. Ron, he's just mama's boy. I don't know, man. He just wants to please his mom. Unless I know उस cookie में क्या था. Macadamia nut. Yuck. कोई भी nut होगा, but yeah, I think Ron, you gotta go out, buddy. I will just say कि Hang multiple that people guy. are here. Multiple people. No. Hold on, wait. No. Don't do that. My opinion is multiple people are wrong here, not just one person. Yes, that I agree with. Ron तो आसान था ही, ठीक है, to begin with, because ये post आया, ठीक है, but mother was not mothering. You mean to say? yes. देख रहे थे Harry Potter. नहीं, he's right. Mother was not mothering. वो पता है cookie show की judge बन रही है. I'm not saying it's wrong. Again, because हमारा उस position में नहीं है. मैं बस उसको इंसान की तरह दिख रहा हूँ. हाँ सर. If you have so much as a high standard, dessert के लिए खुद बनाओ. Holiday है, बनाओ खुद से. She's doing that. to have. वो तो कर रही है. But ये जो भी select होता है वही सर्व होता है ना फिर later on. Yes. Like जिसने बनाया basically. I think it's her dish. Obviously तो अपना तो reject करेगी नहीं वो. Plus अगर किसी और को पसंद आए तो वो भी. Yes. ठीक है, खुद का खाना तो खुद होता है. Of course. But फिर सब कुछ करो ना. नहीं सर, ये अपन कह नहीं सकते ना, like उनका फैमिली उनके हैं, अपन बस जज कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं. Exactly. I agree. With the limited information that we have. हाँ, कि कौन asshole है. तो Yes. mom is little bit weird, little bit in the wrong. Not an asshole. Wife, not an asshole. Ron, you gotta go. Nah. Because I do feel कि उसने अपने mom के साथ बात ही नहीं किया इसके बारे में. खुद ही अपने. He is talking on behalf of her, his mother. उसकी wife से. Which is wrong. Cool. I get that. Yep. Then what's your final statement? Bro, ice cream खा रहा है. Made by Ron's wife. नहीं, ये अमूल है. हाँ, तो नहीं, same statement. Wrong तो है ही, but mother also. मतलब Okay. Cool. So दो assholes. Yeah, we have sort of mixed opinions about everyone Mixed here. up. Okay, पारी तेरा नहीं है. क्या? Are you saying cookie is an asshole? I am saying Ron is the asshole. Actually, no. Ron is confused and a bitch. Okay. Wife is probably a bad cook. Probably not. I don't know. Okay, yeah, you're right. I mean, we cannot say. Yes, that is my point. And the wife is and the mom is not mothering. As she should. Because holiday already is a time जहाँ पे heated discussion होते हैं and families get थोड़ा heated up. And I उस think time पे ये competition करना is not maybe the best thing. True. I agree. That point also I agree. Yes. In the word you're looking for is kalish. Yes. Exactly. Holidays are the days कि जब you know spend good time with your family and laugh about it, eat good food. Sir, ये पढ़ के मेरे को लग नहीं रहा they're having a good time. Just saying. हाँ. So you and me have very different holidays. ठीक है, मेरा holiday कभी भी good time तो नहीं हुआ आज तक. Same bro, same. For reference, मैं ऐसे कैंपस में जब थे हम लोग, ठीक है, होम पोस्ट कितना 2 घंटा दूर, 3 घंटा दूर मैक्स. स्टिल मैं दिवाली पे घर पे नहीं जाता था. There was a reason. I'm okay with ऐसा normal family, not extended. Extended जहाँ हो जाता है उसमें फिर कलेश हो जाता है. हमारा तो extended ही जाता है. Normal family ऐसे कि you are talking about your mother side. Just अपना घर, mom, dad, siblings. That's it. Basically तो तेरे घर में रह रहे हैं. That is okay. हाँ. वो तो okay होता ही है. मेरा extended तो बहुत ही extended होता है bro. हाँ. The more extensions you add, the chances of kalesh get more. हाँ, somehow चल जाता है. The probability of kalesh is directly proportional to
extensions. Yes. मेरा चल जाता Yes. समहाउ cause I think probably सब लोग एक ही एरिया में काफी टाइम तक रहे, so they understand each other. You are lucky. So Yes, I think इसके केस में the extended family is not extended family, it's a joint family. Joint family who live close by, very close by. मैं talking about Yes. only mother side के बारे में. पापा साइड का तो बहुत दूर रहता है, तो वो मुश्किल है थोड़ा. ज़्यादा बात नहीं होती. Anyway, Coming back to the podcast. Do you think we have time for another one? मैं तो X करना start कर रहा हूँ. देख लो. क्या नहीं करना because Let me it's think 1:6. because But okay, it's about high घंटे का है, starting का 5 मिनट I can remove, बीच में F1 was 5 मिनट. We have about 1 hour का recording. Formula 1 was more than 5 minutes. थोड़ा Okay. सही में ऐड करना है क्या? नहीं, I'm I mean, okay. thinking कि remove करने के बाद we have around like 50-55 minutes of content. Should we do one more? कर लेता? Why not? अगर होगा तो उड़ा देंगे. मजा आ रहा है जस्ट करने में. Cool. This is the last one then. उसके बाद अगर करना बातचीत करना हो तो मैं भेज दूंगा लिंक. मेरे पास एक दो और है, मस्त जज करना, but this is the Okay. last one. Get the spiciest one, bro. Okay. I'll get the most controversial one according to me. Okay. So, मैं इसको summarize नहीं कर रहा हूँ. Imagine that I am the poster and I am just reading this out. Cool. Okay. So I have to guess Okay, if you're I an know. asshole or no. Yes. Okay. Me, Okay. anyone involved, because इसमें मैं और मेरा boyfriend involved. That sounds wrong. But okay. I'm not dating anyone. It's 2025. Fine. And I'm okay I don't with think that. so. I'm not think so. dating That was the anyone. problem. That is not the problem, sir. I have the answer. Muffin is the answer. Ruko. I am an asshole. Fuck. Anyway, I'm reading this up. This might sound dumb, but hear me out. I have always been a picky eater, especially when it comes to tomatoes. Ever since I was a kid, my dad would make me spaghetti from a different method. I like to have a sense of the sauce in the noodles, but not the overpowering flavor of the sauce in the noodles. So what he would do is, my dad would separate the spaghetti that he would make for me from the rest of the family's spaghetti, and he would normally sauce it up, but then rinse the sauce in the sink from the noodles, of course. I love noodles that are made like this and have a subtle tomato vibe in them. Now, me and my boyfriend have known about this when we first started dating. He always told me that my food habits were cute. We have been dating for almost 3 years now and moved into it at the beginning of the pandemic. So this dates the post somewhat. And ever since we moved in together, he insisted on taking in charge of cooking and all cooking-related tasks, for example, dishes, groceries, etc., etc. And he assigned me the role of cleaning the bulk of the apartment. We split the task 50-50. Everything was perfect. And it seemed like he was making noodles the way I liked them. This was until the last week when we had spaghetti. We eat everything and it was good. But afterwards, he started teasing me, saying things like, "You really like your pasta with an quote-unquote essence of tomato, don't you? How was your tomato quote-unquote essence, babe?" Always using finger quotes around the word essence. After a few comments, I felt something was off, and I asked him if he had done something differently. He just said, "I didn't do anything other than I do usually. I just never made you pasta the way you thought I made it. I have just been boiling them and giving them to you." Apparently, this entire time we have been living together, he just skipped the pasta sauce and claimed that he had done this step. That is, cook them in the sauce and then rinse the sauce. I think the lie that he told me was a huge breach of trust, and the refusal to make dinner. And he refused to make dinner how I wanted him to do. I have admittedly been acting passive aggressive to him, but he thinks that he did nothing wrong. Am I overreacting? And am I the asshole? Okay. This is spicy one, honestly. Some might say it has no flavor, no spice. Only essence of spice. Only essence of spice. Oh, go ahead, Prakash. Me first. No. Let's keep it. Last post में he went first. You have to go first this time. I think we were doing it as पहले दी, but ठीक है, कोई नहीं. Okay.
शॉर्ट आंसर नो, बॉयफ्रेंड इज द आंसर। ठीक है, आर्गुमेंट्स फॉर द क्लिप। ठीक है, क्या लेट्स से अगर उसने बोला होता कि ठीक है, नो हिस्ट्री नो कॉन्टेक्स्ट नथिंग, जस्ट के लिए बोला था कि आई वांट लाइक आई लाइक स्पैगेटी मेड लाइक दिस। ठीक है, टू अ फ्लैटमेट जो कुक करता है, या फिर नया बॉयफ्रेंड। ठीक है, या फिर जस्ट बॉयफ्रेंड जो खाना बनाने जा रहा है। ठीक है, देखो बॉयफ्रेंड ने बोला कि आज मैं स्पैगेटी बनाएगा, एंड शी सेड कि आई लाइक स्पैगेटी दिस वे, और वो नहीं करता ऐसा। ठीक है, वो नॉर्मल बॉइल्ड स्पैगेटी दे देता बेसिकली, वाज फाइन। बट इधर दे वर टुगेदर फॉर 3 इयर्स। ठीक है, दूसरा उसने खुद से बोला कि आई विल टेक चार्ज ऑफ कुकिंग। ठीक है, Yes. so if you're taking charge for the cooking, you have to agree with whatever the other person also decide. ठीक है, अगर उसने बोला कि उसको पालक पनीर नहीं पसंद है तो मत बनवा पालक पनीर। नहीं, सॉरी भाई, तूने बोला नहीं था। ठीक है, तूने बताया नहीं था। hold. Stick to the topic, guys. आपसी कलेश बाद में, आपसी कलेश हॉलीडे टाइम करेंगे हम लोग, अभी नहीं। मैं मुफ्त का बात नहीं कर रहा था, मैं तो ठीक है, नेवर माइंड। तो Wait, तू किससे बनवा रहा पालक पनीर? hold on. What is अरे going on? डीओ के टाइम आया था ना ये पहले, तो मैंने But ऐसे he कॉल said- करके पूछा था। He said तेरा बात नहीं हो रहा। हाँ, लाइक मेरा बात, ओ Minecraft user noises. इंटरेस्टिंग। बोलो प्रखर, आगे बढ़ो। स्टोरी इंटरेस्टिंग आ रहा है, पर्सनल स्टोरी भी जाओ थोड़ा थोड़ा। टाइम नहीं हुआ, कमिंग बैक टू द पॉइंट। Yes, yes. ये सेकंड आर्गुमेंट है कि खुद से जिसने चूज किया था, एंड सबसे स्ट्रांग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट इज ये उसने बताया था कि मेरा पापा ऐसा बनाता था। देयर इज अ इमोशनल कनेक्शन टू द थिंग। ठीक है, यू डोंट प्ले विद दिन ऐसा उसे। हाँ, ठीक है, एंड आल्सो इफ ही वाज डूइंग इट लाइक दैट कि लाइक बस नॉर्मली उबाल के देता था एंड शी वाज हैप्पी, फाइन। ठीक है, तो लास्ट में ये ऐसा हाँ सरप्राइज मैं तो नहीं कर सकता, तू प्लसीबो पे करने को कौन बोला? Exactly. नॉर्मली रहता है। 3 साल गेम खेलने के बाद ये हाँ मैं तो रेडिएंट हूँ, ये क्या तरीका है बे? नहीं, उदित could never. I think I stress bro. Oh my god. बट हाँ, आई टोटली गेट यू बाय द वे। Same. कि हल्का सा डिफरेंस मेरा, बट you go on. मेरा डिफरेंस ये है कि शायद वो बॉयफ्रेंड ही जस्ट सक्स एट कुकिंग स्पैगेटीज। मेरा पहले ये था कि तक से बना ही रहा, वो लड़की को पता नहीं चल रहा टमाटो सही है नहीं, एसेंस आ रहा है। बट अगर पहली बार करता तो भी मैं एक्चुअली नहीं चलाता। नहीं, इट्स रॉन्ग। अगर मैं लड़की जगह होता आई वुड, ओके पहली बात आई अंडरस्टैंड कि सामने वाले को बुरा कैसे लगता है। अगर बट मैं होता मेरे को शायद बुरा नहीं लगता। आई वुड बी लाइक प्रॉब्ली मैं आई डोंट नो, इमोशनली डिस्कनेक्टेड बोल सकता, बट जनरली ज्वाइन नहीं करता मैं ऐसी चीजें। तो आई वुड बी लाइक कि इंटरेस्टिंग, तो मे बी आई डू लाइक टोमेटोस। मेरा एक्चुअली ऐसा ही हुआ था, मेरे को पहले नहीं पसंद थे टोमेटो, सेम। बट ये सेम चीज यू कैन डू ऐसा बता के कि बता के, हाँ ट्रू। Which But is हाँ, also my point as well. कि ठीक है, I understand कि she has a specific way of eating spaghetti. ठीक है, पहले दिन जब ये हरकत किया था ये बंदा कि नॉर्मली वो उबाल के दे दिया एंड he said कि he did the essence of tomato वाला thing and ये बंदी खा ली, इसको पता नहीं चला। You tell her at that point ना कि सुनो कुछ अलग लगा क्या। If she says no, then बात करो, say कि I did do anything, and अगर तुमको लगता है कि पास्ता सॉस डालने से कुछ हो रहा है तो it's just in your brain because you didn't find the difference. If you Okay, I still feel understand like that. it, हाँ, But बात करो। let's just think 3 about साल it का कि ये नौटंकी। नहीं फाइड नहीं आप ओके। मेरा आर्गुमेंट ये है कि थिंक अबाउट इट कि अगर तुम बॉयफ्रेंड हो एंड यू आर द वन कुकिंग, वुड यू डू इट? See, this you have to agree this is a weird thing. पहली बात, is it weird or not? This is very weird. This is weird, right? Yes. So obviously you will have questions कि अगर ये क्या है, मतलब if I was in that place I would obviously think कि this doesn't make any sense. Yes. अगर तुमको पास्ता में टोमेटो वाइब चाहिए तो तुम उसको साफ ऐसा पानी में रिंस करके खाने का व्हाट्स द पॉइंट? So I would cook like it. I would talk directly and I would do a scientific experiment. In cup A is this noodle, in cup B is this noodle. खा के डिफरेंस बताओ मेरे को। Yeah, fun experiment type. That's fine. Yeah, let's talk about it. Let's really see if you find it or not. But I understand वो वाला issue की emotional connection है। Emotional connection है, yeah. तो उसमें ज़्यादा अच्छा निकल सकता है।
I don't agree with that experiment. नहीं, when emotions comes in, नहीं, उसके बाद नहीं फिर नहीं, बात it's like you discuss this beforehand, no, कि अगर वो मना ही कर रही है तो it's fine, कि don't do it. हाँ, But मतलब feel like कि wanna try that, go. अगर उसको दिक्कत नहीं है तो, अगर दिक्कत है तो नहीं करना है. पहले I'm तो just saying what I would do. करना I'm क्यों not करा? agreeing with anything happening here, agreeing or disagreeing. I'm just saying what I would have done in this case. And अगर उसको नहीं माना, then we have different opinions, and then we can disagree about it. That's a different thing. Obviously, what he did is wrong. Yes. हाँ, प्रकाश को क्या बोल रहा था? Yes, I was going to say the same. मैं तो बस मैं begin with मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा. अगर उसको ऐसा चाहिए, ठीक है, if they want ऐसा washed noodles, बना देगा मैं. But don't you think it's a waste of food, bro? Yeah, same. मेरा भी same वही था issue. Waste of food तो नहीं होगा ना, noodles तो use हो ही रहे ना, खाता रहिए. नहीं, Just wash it. पास्ता सॉस तो वेस्ट हो रहा है. पास्ता सॉस से जा रहा है ना. You're rinsing it down. Spaghetti कितनी बार बन रहा है? It is still a waste of food. No? मतलब I understand कि हाँ, अगर नहीं करना है तो fine. पालक पनीर भी है. मैं बोला क्या उसको नहीं ना. क्या waste of food? हाँ, क्यों? What? कैसा waste of food है? Bro, I like. Okay, imagine this. तू घर गया and तेरे घर में अचानक से छोले चावल बन रहे हैं, बट छोले चावल में छोले को ऐसा धो के चावल को पड़वा जा रहा है. क्वेश्चन तो करोगे ना तुम कि नहीं, लाइक रिंस करके चावल को पड़वा जा रहा है. तो ये क्वेश्चन स्टोरी टाइम पे पूछना, जब उसने स्टोरी बताया कि ऐसे बनता था मेरे घर पे. That is what I was saying. लाइक गेस कर इसके अंदर क्या है. 3 साल तक यार नहीं करना चाहिए था. एंड इफ यू आर डूइंग इट तो बताओ मत उसको. Just keep it to yourself. Yes, just keep it to yourself, bro. Which is also wrong, but अभी कर रहे हो तो मैं कौन होता हूँ. नहीं, अगर पता है कि you fucked up, keep it up. इसमें ज़्यादा issue ये है कि he still doesn't know कि उसने गलत किया है कि नहीं. नहीं, there is a edit now. यहाँ तक में कहानी बस थोड़ा स्पाइसी सॉसी. इसके बाद जो एडिट है, then you will realize कि कितना भयानक आदमी है ये. So obviously after this दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ and they broke up. And after they broke up, she found out some more things. For example, ये बंदा told her that he was a pharmacist. He worked as a pharmacist. But that was a total lie. He just worked at a CVS. Second off, she found out he cheated with her. He cheated on her with multiple girls at the college. And lastly, she wanted a dog, घर पे. But he said and lied that he has allergy to dogs and doesn't like them. Okay. Wait. Question number 1: How do you find it out after the breakup? And दूसरी बात, that guy deserves to die. That's a bold statement, but ये पैराग्राफ पढ़ती मैं भूल के पूरा पीछे कहानी मतलब भाड़ में जाता नहीं. भाड़ में स्पैगेटी तुम आदमी ठीक नहीं हो. हाँ वही, like bro, bullet to your head, bro. Fuck you. अरे इतना Forget the pasta. नहीं, not bullet to his head. Extra चलेगा मेरे को. अगर like one night वाला चीज है, just to sleep with her, you are an asshole for sure. Deserve to go to jail. 3 साल bro, 3 साल. 3 साल उसकी लाइफ का क्या किया उसने? सबसे पहले 3 साल तो छूट कैसे बताते जॉब के बारे में? How do you do that? नहीं, I'm impressed. How do you do that? No, it's not that difficult, honestly. Actually, if you would be surprised कितना सारा लोग अपने ऐसा पार्टनर्स के वर्क प्लेस पे कभी गए नहीं है या फिर वर्क प्लेस के लोगों से कभी मिले नहीं है. ठीक है, so it's very easy to convince someone कि like मैं इधर काम कर रहा है फिर ये काम कर रहा है. Yeah, you know Bunny Stinson, right? हाँ. सर ये फिक्शन में क्यों घुस रहे हो तुम? Yes. आदमी पे चला गया आदमी. बट हाँ ठीक, ये पहले वाला हो सकता है, पॉसिबल. अच्छा है कि नहीं वो तो नहीं मैं बोल रहा कि अच्छा नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है. My initial okay, so like my concluding statement for this whole fiasco is my initial reaction was everything again. Everyone sucks because I don't like this tomato vibe thing. I don't like this. Obviously, ये लौंडा जो हरकत कर रहा है, I don't like him. But after thinking थोड़ा बहुत, I think the girl is थोड़ा बहुत justified. चलो ठीक है, उसका आदत है, emotional attachment जो भी है. But this guy sucks. मैं तो कहूँगा मैं बोलूँगा पिज़्ज़ा कैन पुट अ सॉल्ट दिस इजीली, बट ठीक है, स्पैगेटी खाना खाओ. It's a food problem, I see. मतलब बिना टोमेटो सॉस के पिज़्ज़ा तो देखो बनने नहीं वाला है. धो के बनाओ कैसे बनाओ. तो जस्ट ऑर्डर पिज़्ज़ा ना. ब्रेड के ऊपर चीज, नो टोमेटो सॉस. हाँ, इंटरेस्टिंग. मार्गरीटा. नहीं, आई एम नॉट यूरोपियन. कैसा परफेक्ट डच रिप्रेजेंटेशन था वो ब्रेड पे चीज. ठीक है, I know, sir. Been there, done that.
didn't like it at all. Yes. My में भी टमाटो सॉस लगेगा थोड़ा सा. हाँ, I'm just saying कि what would the order be like? फोन करके डोमिनोज में, I would like to have margarita pizza but without tomato sauce. सामने से गुस्सा आ जाएगा थोड़ा सा. बहन कर रेड लेप डाल दे चीज पर. ग्रेट चीज बोलते हैं उसको. It's asking omelette without eggs, please. Thank you. Can I have a vegan omelette? Thank you. अरे यार. एक्चुअली हो भी सकता है ये. कैन यू सर्च इट अप? वीगन ऑमलेट है क्या? I'm pretty sure होता होगा पक्का. But that is not an omelette ना. पर उसको बस omelette बोल रहे हो. ऐसे तो मैं पिज्जा को सैंडविच बोल दूं चलेगा क्या? अरे नहीं ना. नॉट ऑमलेट होगा उसका नाम प्रखर. वही तो होता है. हाँ, but see, vegan meat भी तो होता है ना, but we can't call it meat, but they are calling it vegan meat. So वीगन मीट. और जो उसका बर्गर बनाता है आई थिंक नॉट बर्गर समथिंग कुछ नाम दे देता है. exactly, हाँ, not burger. There is a recipe for vegan omelette made from rice starch and potato starch. चिल्ला बना रहे क्या? Cheetah for Yes. omelette. Cheetah is not omelette, bro. What the hell? फिर तुम्हारा चिल्ला क्या होता है? इज इट नॉट लाइक बेसन. क्या? बेसन. I'm agreeing to you. I'm just saying it's vegan. इसका अच्छा vegan omelette ठीक is है. not. आई थॉट कि चिल्ला कुछ अलग होता होगा लाइक कबाब टाइप शेप कुछ होता होगा. Cheetah होता है. Yes. Also, There is also a version with chickpeas. यस. छोले के साथ कौन omelette बना रहा है? I think chickpea is their favorite thing. सब चीज के लिए chickpea use करते हैं हम लोग. आई कैन सी व्हाई. It has. Also, yes, the whole It's just not nomenclature, right? Everything except omelette could be called not omelette. ठीक है. मैं चिकन पॉपकॉर्न लेकर आऊंगा उसको भी मैं नॉट ऑमलेट बोल सकता हूँ. है ना? सर क्या पता. प्रॉब्लम चिकन के साथ है थोड़ा, तो आई डोंट थिंक वो खाएगा. वेट किसको प्रॉब्लम चिकन के साथ? वीगन्स को. अरे ठीक है. मुझे लगा तुम ऐसे मेरे से क्वेश्चन कर खाएगा मैं तो खाऊंगा. नहीं पता खाएंगे और चिकन पॉपकॉर्न को भी मना कर. हां तू मेरे को एक्चुअली वीगन नॉट ऑमलेट देगा मैं वो भी खा लूंगा. कोई दिक्कत नहीं है. चीला है भाई, चीला तो खा सकते हैं. just don't call it vegan non omelette. Call it cheetah. I'm happy. आई एम फाइन. मतलब कुछ भी नाम दे दो जो दे दो मगर मेरे को खाना दे रहे हो तो फाइन यार. तुम तो vegan burger को मैं कालू टिक्की बोलो, मैं खा ले, मेरे को कोई इशू नहीं. कोई इशू नहीं. तो यू सेइंग वीगनिज्म के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ब्रांडिंग का है, मार्केटिंग ढंग से नहीं है. नहीं आई थिंक लोग Half of it is marketing, half of it is the people. But maybe 5% or 10% is actually food. Not all vegan food is good. Some of it is good. तुम लोग किसी वीगन से मिले हो कभी? Yes, मेरा roommate था वहाँ पे. non-vegan food. Oh. Did he ever try to tell you कि bro हाँ फिर तो फिर decent guy. He was वैसा normal vegan, I think. मेरे को तो जो मिला था he was trying to convert me to vegan. ऐसे points बता रहा कि ये नहीं करा भाई. You do you bro. मैं तेरे आके भी खाऊंगा, मैं उधर के जाके खाऊंगा, मैं खाऊंगा. रोको मत यार. मेरे को खाने से मतलब खाना अच्छा होना चाहिए. That's it. हाँ वही. I don't know जो करना है करो. और जिम में खाना आंटी आई थी. ब्रो जिम में आंटी आई थी. बोलते कि दूध मत पिया करो. ये मेरी ब्रांड का है. हम लोग ऐसे आलमंड मिल्क बनाते हैं, ओट्स मिल्क बनाते हैं. बहुत ही गलत साउंड किया ना जब ऐसा हो रहा मेरी ब्रांड का मिल्क है. I am not here for whatever you're advertising. Sorry. Like this is not that kind of a gym. फिर शॉर्ट क्लासेस लेके भी आई थी. बोला ये लो आलमंड मिल्क है, ये ओट मिल्क है, ये सोय मिल्क है. कुछ जो पसंद है ट्राई कीजिए. मैं बोला तीनों ही ट्राई करा दीजिए. So this is getting awkward now. Yes. Coming back to the spaghetti. Spaghetti. Okay, Yes. हाँ मेरा बचा है ना. Yes. End it and उसके बाद we'll try to end the podcast. So यही Yes. episode करते podcast. हो भी सकता है. तुमको पता है ना मेरा कर्स. I know, sir. I know. हाँ so पहली बात इम्प्रेसिव बंदा 3 साल तक झूठ बोला भी नहीं पकड़ा गया और अभी बहुत ही बड़े-बड़े झूठ बोले. Deserves an award. The award of being the worst guy in existence. नहीं gun to your head. That's an award. Okay. कि like bro I'm impressed but bro. और fucking story भूल गया अपन पीछे जो इतना घूमे ना. कोई बात नहीं. और हाँ आई एम अपसेट कि वो लड़की खाना वेस्ट कर रही है. Agreed. That is the one thing that stings me थोड़ा सा, but कोई बात. हाँ उसके कंपैरिजन में ये जो लौंडा किया है, that is just that is way worse. और जस्टिफाइबल नहीं बोलूंगा उसका मैं. इमोशनल अगर अटैचमेंट है भी तो वेस्टिंग द फूड वो कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है. एंड या आई थिंक guy was an asshole for sure. Okay. लड़की should reflect.
पहली बात तो ऐसे भरोसा मत करो किसी के भी, पूरा चेक करो। और इतना झूठ कैसे बोल गया भाई? एंड डोंट वेस्ट फूड प्लीज। So after that PSA announcement, I would like to thank you all. Yeah, that's okay. That is where we should stop. I don't think अपने पास और time है discuss करने का. Again, thank you all for listening. Actually, उससे पहले कुछ और करना है मेरे को. Hold on. अपना जो next episode होने वाला है, I want to reveal कि who is going to host that. Okay. Oh, it's a sweet time, I think so. Yes, it's real time. Yes. Yay, And free time. I want to do But are this. you on the way? मेरा percentage कम होगा because I hosted this one. So I am 20% and you guys are 40-40 each. So and I want to implement this every I want to implement this every recording. 20 is still high, but okay. So what do you want to do? बताओ. 20% is what this is. Still very likely, right? Should be 10 max. Cool. मना कर दो। Oh, I don't mind that also. नहीं, because wait, back to back ऐसा अब अपन 3 लोग हैं. Back to back hosting एक ही बंदा तो hosting is should be actually lower chances. So makes sense. Okay. Cool. Let's see who does the next recording. Of course it's me. Let's go. Hey, welcome to the podcast. We have a new host. Nice. So Muffin will be hosting the next episode. Make sure you are there for that. जब भी हो आए. And with that, bye bye. जहाँ भी हो, गाड़ी से आ रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, ठोको गाड़ी. I don't care. नहीं ठोको नहीं. Don't waste food. Come do it. It's not worth it, bro. Intentionally मत ठोको. I'll say that. But हाँ काफी easy है ना जज करने लोगों को. Yes, that was the point. It's fun, it's easy, and there are no consequences if you're doing it. 3 दोस्त मिलके आपस में. हाँ आपस दोस्तों में. Obviously, yeah. हाँ, Don't record it and post it anywhere, of course. Never. Public. I wouldn't even do that. Sure. Exactly. Bye bye everyone. Bye bye. Bye. Bye bye.